squirrel cage type induction motors are more widely used, more oftenly used, right? If you see any of the induction motor at your house, right, you will find it that it's a squirrel cage type motor. Is this clear, बच्चों? Is this clear? अरे ये सुनो, आवाज नहीं जा रही है? Yes, sir, clear. Right. Even I have told to you about the working of this in the previous class, and the working was like that कि when we connect this stator to the three-phase supply, a rotating magnetic field is developed. Right, a rotating magnetic field is developed. ठीक है. Suppose there are three-phase windings that are placed 120 degree apart from each other in space. Right. When we connect this to the three-phase supply, our rotating magnetic field starts flowing in the air gap, right? And it rotates with the which speed? This magnetic field inside the air gap rotates with the synchronous speed. Right. It rotates with the speed called as the synchronous speed. So your flux, let me write over here for your convenience, that the flux, your rotating magnetic field, rotates with the synchronous speed. With the synchronous speed. Right? The synchronous speed Ns is what? It is given as 120 F by P. Is this fine? One more fact I want to know, where what this F denotes? F denotes the frequency of the supply. Right? And P denotes the number of poles of the motor. Right? One more thing, that this motor is also called as asynchronous motor. What we call this motor to be the asynchronous motor. So why do we call this motor as asynchronous motor? Sir, because rotor does not rotate at synchronous speed. Very good, very fine. Because this rotor, which is being allowed to rotate around a one shaft, right? It rotates, but this rotor cannot rotate at a speed equal to the speed of the magnetic field. That is the synchronous speed. That's why we call this motor as asynchronous motor. We also call this motor as asynchronous motor. Asynchronous motor, because it cannot rotate at a synchronous speed. Now, why does it cannot operate at a synchronous speed? Who will answer this question? Was raised the hand? Only the Sunil? Anyone else? Ayush, let us give the chance to the Ayush. Ayush, okay, you tell it to the class. Why it cannot rotate at a synchronous speed? सर जो EMF इंड्यूस होती है मोटर में वो रिलेटिव स्पीड की वजह से होती है, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती रहती है और वो अगर सिंक्रोनस स्पीड चली जाएगी तो स्लिप जीरो हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी, EMF इंड्यूस जीरो हो जाएगी, तो कभी सिंक्रोनस स्पीड अचीव नहीं कर पाएगी. Right. Basically, what Ayush has told us is that this flux cutting action will be happening till there will be a relative difference in the speeds of this flux and the rotor conductors, right? जब तक रोटर कंडक्टर्स और फ्लक्स के बीच में रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस है ना, तब तक फ्लक्स कटिंग एक्शन होता रहेगा. ऑब्वियसली जब ये रोटर रुका हुआ होगा उस समय पे फ्लक्स कटिंग एक्शन तेजी से होगा, क्योंकि इसको मान लो ये एक फ्लक्स लाइन है, तो इसको वापस इसको कट करने में जो समय लगेगा जब ये रुका हुआ है वो कम लगेगा.
जब ये इसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा तो वो समय धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ये गति बढ़ेगी, जैसे जैसे इस कंडक्टर की स्पीड बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में, उसको उतना ही समय एक्स्ट्रा लगने लगेगा, है ना। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि दो लोग हैं, एक इस सर्कल पे खड़ा है और दूसरा इसके आउटर सर्कल पे खड़ा है ना। यहां पर ये जो व्यक्ति है अगर ये रोटेट कर रहा है और ये वाला अगर स्टैटिक है, ये रुका हुआ है, तो इसको पास करने के लिए जो समय लगेगा वो कम लगेगा। कब के बतौर, जब ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लगे। आप देखोगे कि अगर ये भी मूव करने लगेगा तो इसको, इस आदमी को क्रॉस करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, राइट। और दूसरी स्थिति कब बनेगी, मान लो ये भी इसी गति से दौड़ने लगे जो इसकी स्पीड थी, जो इस व्यक्ति की, ए व्यक्ति की स्पीड है, यदि वही बी व्यक्ति की भी हो जाए तो क्या ए कभी भी बी को क्रॉस कर पाएगा? यस और नो? नो सर, नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 है, राइट। तो यही होता है इस केस में कि यदि ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगे तो क्या होगा कि देयर विल बी अ रिलेटिव स्पीड विल बी 0 बिटवीन द रोटर कंडक्टर्स एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो रोटेटिंग विद द सिंक्रोनस स्पीड। अगर वो दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं तो देयर विल नॉट बी एनी फ्लक्स कटिंग एक्शन हैपनिंग टू एनी ऑफ द कंडक्टर ऑफ द रोटर, राइट। अगर फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा तो फैराडेज लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो भी नहीं होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ तो रोटर के अंदर कंडक्टर भी नहीं हो, रोटर कंडक्टर्स के अंदर करंट भी नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ ही नहीं है। अगर ईएमएफ नहीं है तो करंट नहीं होगा, अगर करंट नहीं है तो वो लॉ भी फेल कर जाएगा जो ये कह रहा था, मतलब लॉ वो लगेगा ही नहीं, दैट लॉ विल आल्सो नॉट बी एप्लीकेबल, जो ये कह रहा था कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड योर कंडक्टर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो क्योंकि कंडक्टर्स में करंट ही नहीं है तो उन पे फोर्स भी नहीं लगेगा। जब उन पे फोर्स ही नहीं लगेगा तो इस रोटर को घुमाएगा कौन? दैट मींस ऑब्वियसली जब फोर्स नहीं होगा तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यस और नो? कहने का मतलब ये है कि यदि ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करे तो उस समय पे फोर्स ही नहीं डेवलप होगा रोटर के अंदर। तो जब फोर्स ही डेवलप नहीं हुआ तो वो रोटेट कैसे करेगा? दैट्स व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस मोटर। So that means always we require a relative speed difference between the two, between the rotor conductors and the magnetic field to have the torque. Is this clear? Is this clear बच्चों? Yes sir. Right? ये भी बात क्लियर हुई कि अगर ये रोटर रुका हुआ है तो उस समय पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफी ज्यादा होगी बतौर इसके जैसे जैसे वो रोटेट करने लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये स्पीड अप होगा रोटर, जैसे जैसे स्पीड अप होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी ना। कम का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने लगेगी, थोड़ी देर बाद, अंतराल के बाद वो उसको कट कर पाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में किसको ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं जितना समय ये इसको क्रॉस करने में ले रहा है। अगर ये रुका हुआ था तो ये कम समय लेता था, लेकिन जब ये रोटेट करने लगता है तो जितनी ज्यादा गति से ये रोटेट करेगा उतना ही ज्यादा समय इसको उसको क्रॉस करने में लगेगा। और एक समय पे यदि ये बी वाला व्यक्ति उतनी स्पीड से घूमने लगे जिससे ए घूम रहा था तो दोनों के बीच में कभी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा ही नहीं। राइट? इसका क्या मतलब था ये आपने फिर सुना होगा, इसीलिए कि जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, राइट, इट इज एस टाइम ऑफ E1। ऑल्सो जो फ्रीक्वेंसी होगी जो करंट की रोटर साइड पे, इट विल बी F2 विल बी इक्वल टू एस टाइम ऑफ F1, वेयर F2 इज रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी मीन्स इलेक्ट्रिकल frequency associated with the current, right? So it will be S time of F2. F2 is rotor frequency where F1 is stator frequency. That is the synchronous frequency. And S is what? S is slip. How do you define the slip? Slip कैसे define करते बच्चों? Slip is equals to what? अरे बताओ भाई, सब क्या कर रहे हो? Synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous. Let me ask it from the Rakshit Jain.
रक्षित छोड़ दिया, गुड, तुरंत भाग गया, नाम लेते। विजया, विजया, Yes, sir. बताओ Yes, बेटा, sir. बताओ। Slip is defined as the drop between the synchronous and the asynchronous speed upon the synchronous speed. Right, right. So if we talk about a motor, let us talk about a motor that is which is having a full load speed. Let us talk about a motor which is having a full load speed equals to 1440 rpm, right? And suppose this machine is supplied with a 50 hertz of input. एक सेकेंड भाई, कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड, चार्जर कनेक्ट। ठीक है। So if your polyphase induction motor, right, is supplied with a 50 hertz, right, it is having a 1440 rpm full load speed. So will you be able to tell me that what could be the number of poles of this machine? हाँ, बता सकते हैं?